मंत्री और हमारे साथ जुड़े दोनों देशों के सभी मित्रगण, नमस्कार। एक महीने से भी कम समय में आज मैं अपने मित्र स्कॉट के साथ तीसरी बार रूबरू हूं। पिछले हफ्ते हमारे बीच वर्चुअल समिट में बहुत प्रोडक्टिव चर्चा हुई थी। उस समय इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शीघ्र संपन्न करने का निर्देश दिया था और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस असाधारण उपलब्धि के लिए मैं दोनों देशों के ट्रेड मंत्रियों और उनके अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री मॉरिसन के ट्रेड एनवॉय टोनी एबट का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। उनके प्रयासों से इस प्रक्रिया में तेजी आई। फ्रेंड्स, इतने कम समय में ऐसे महत्व बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। मैं एक बार फिर दोनों देशों की टीम्स को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडोस एकता के प्रभावी और सफल नेगोशिएशन पर बधाइयां देता हूं। प्रधानमंत्री मॉरिसन को आज के आयोजन में शामिल होने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चुनावों के सफल आयोजन के लिए मेरी शुभकामनाएं। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को भी कल खेले जाने वाले विश्व कप फाइनल के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। I will now invite the Prime Minister of Australia, the Honourable Scott Morrison MP, to make some remarks. Modi, hang on, everyone. You like to go? Your Excellency, my dear and trusted friend, Prime Minister Narendra Modi, to Minister Goyal and to Minister Tehan, namaste, but also g'day from here in Launceston, in the island state of Tasmania. I feel it's a very timely and relevant place for me to be because this is the home of crayfish, of sheep meat, of our wool and the many other berries and other things that form part of this agreement. I'm so pleased to be able to join you here from Tasmania today. As Prime Minister Modi mentioned, it was only last week that we were meeting as part of a very productive annual virtual summit, but this was of course not the first time we've met. We've met on many, many occasions, and I go back to 2014 where I had the good fortune to be seated next to Prime Minister Modi then, Prime Minister when I was then the Immigration Minister.
And it was Prime Minister Abbott who introduced us on that day back in 2014. And I also want to join with Prime Minister Modi in extending my thanks to the former Prime Minister Tony Abbott when it comes to the agreement that we've been able to reach on this day. I said then at our virtual summit last week that the pace and scale of our cooperation since we announced our comprehensive strategic partnership has been remarkable. Some $282 million in new initiatives that my government has announced, including at the summit, which will drive our expanding cooperation. This is the single largest Australian government investment in our relationship with India, but it won't be the last. And now we mark another milestone in that relationship, the signing of the Indus Agreement, the Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement. This agreement further develops on the promise of our economic relationship, realises it. It will facilitate cheaper Australian goods to India, wool, horticulture, coal, LNG, amongst many others, supporting India's economic growth and development. It will unlock deeper cooperation in critical minerals and rare earths, which I know is an area of increasing importance to India's growing manufacturing sector and a very common topic of our discussions as part of the Quad Leaders Dialogue, which I share with Prime Minister Modi. And it will further deepen the warm and close ties between our people by delivering increased work, study and travel opportunities. Importantly, it sends a powerful signal to our businesses and investors alike that one of the biggest doors is now open to a great economic partnership, two dynamic regional economies, like-minded democracies, working together for mutual benefit. It also delivers a clear message that democracies are working together